Hello everyone, I am Tanu Sharma from BSc Chemistry Honors Final Year. Today I am going to perform an experiment, salt analysis of given compound. For this we have taken this compound. This is white in color and has no smell. सोलिबिलिटी चेक करने के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें एक कंपाउंड डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए शेक करेंगे। तो ये पानी में insoluble है। Now we can say that this is insoluble salt. Now we have to check the solubility of this compound. Firstly, for this experiment, we have prepared concentrated ammonium acetate solution. For this solution, we add concentrated ammonium acetate into a large amount of water. Then this solution is observed. Second, we have prepared dilute acetic acid solution. For this, we have taken dilute acetic acid solution. For this, we have taken dilute acetic acid in a large amount of water. Second, we have prepared dilute acetic acid solution. For this, we have taken concentrated acetic acid solution in a large amount of water so that the concentration of the solution becomes dilute. Now, we have to take these two solutions in two different test tubes. Now we have taken a small amount of our given unknown compound in a test tube. Now we will add our dilute acetic acid solution into our given unknown compound. Now we will shake it for some time. Now we will add our concentrated ammonium acetate solution to this mixture. Now we will heat this mixture for some time. Now we will heat this whole mixture for a while. Now after heating this mixture, we will add Ki solution to this mixture. We can see that after adding Ki solution to this mixture, we will get this yellow color. It means the lead ions are present in this mixture. So our compound. So in this after adding Ki solution to this mixture, we get yellow PPT, and these yellow PPT confirm the presence of Pb in the solution. We will make a BaCl2 solution. For this, we will add BaCl2 in a small amount of water, small quantity of water. Now we will mix it properly and BaCl2 solution formed. We will add BaCl2 solution to this mixture. We can see that white PPT is formed, thus sulfate ion is confirmed. Thus, in our last step, we have confirmed the Pb ions, and in this step, we have confirmed sulfate ions. So, our final compound that we obtained is lead sulfate PbSO4. सबसे पहले हम राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर एसिटानिलाइड ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे।
अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 4 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे। अब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनाने के लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे। इस बात तो और फिर इसको आइस बाथ में कूल करेंगे। अब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर को इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इस मिक्सचर को कर दे रोक रोक अब हम एक बीकर में कोल्ड वाटर लेंगे और इस मिक्सचर को उसके अंदर ऐड करेंगे। Now we can see that the crystals are preparing. Now we will filter this solution. क्यों बोल ली भाई? हम देख सकते हैं बॉटम में क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर रख के फिल्टर पेपर से फिर अलग कर लेंगे।